call is now being recorded. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा Good दैट इज morning, sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एक्सरसाइज 5.3 का जो हम लोग क्वेश्चन कल बनाए थे 4 तक बनाए थे. टुडे वी विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम. हम लोग आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आज लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे. आज अंतिम कर देंगे. ठीक है. हाँ सर. ऑल राइट. क्या शुरू करें या और भी अभी ज्वाइन करने के लिए बाकी है? अभी तो ज्वाइन करने के लिए बाकी है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं और वो ज्वाइन करेंगे. व्हाट्सएप पे भेज दीजिए मैसेज उनको. ठीक है, क्लास शुरू कर देते हैं. ठीक है. यस सर. ऑल राइट. आज हम लोग गुड मॉर्निंग सर. एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे. फाइव में दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सरसाइज 5.3. गुड मॉर्निंग सर. We have solved up to question number 4. Now question number 5. The first term of arithmetic progression of AP of an AP is given, and AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400 and sum is 400. Find the number of term and common. Find number of term and common difference. कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसके बारे में पता करना. तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. इसमें दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 and sum is 400. Find the number of the term and the common difference. We have to find out the number of a term, that is n. हमें n निकालना है and common difference, that is d. So as you know the formula of sum of term of an arithmetic progressions, we have derived the first formula is that Sn equal to Good morning, sir. good morning n by 2 2a plus n minus 1
D. So here we can see that here n is not given, number of term is not given. We have to find out the number of the term. So that is n. Now common difference is not given. First term is given, but two things is not given, so we cannot find it. Now next formula is that Sn is equal to n by 2, that is first term A plus last term. So here Sn is given, Sn is 400, that is sum is 400, sum is given, so Sn is given equal to 400. Term, we have to find out the term. A is given, that is A is 5, and the last term is 45. So L is given, L is 45. So from here we can find out, that is the we can put the value of the different thing, that is the sum of n term, first term and the last term. Then we will find out the n, the number of the term. Now we will put that is value of Sn 400 equal to n by 2. First term is 5 plus 45. We get 400. 400, that is here. 400 equal to, it will be 25n, that is will divide n by 2 into 50, or in this way we will get, that is 25n, or 25n equal to 400, and then we will divide it, or we will get n equal to how much? It will be 60. No, it will be 60. So n equal to 60. So we have find out the term of arithmetic progression, number of the term in arithmetic progression, that is 60. Now we have to find out the common difference. Now how we will find out the common difference? So we will put that in that is the formula, and that is value of n term equal to a plus n minus 1 b. As n is given, that is 45, a is given 5, term we have find out term 16, and we have to find out the d. So common difference can be find out from here. So putting value, that will put the value 45 equal to 5 plus, that is 16 minus 1 b, or you will get 40 here after subtracting this one, equal to 15 b. So now again come in fraction. So a fraction Maya, that is it will be in fraction of d equal to 40 by 50, or you can divide by 5, 8 by 3. So you can get 8 by 3. 8 by 3, that will be 8 by 3. So in this way we have solved the problem, that is problem number 5. Any problem? इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ? No, sir. नो प्रकृति रानी? सर समझ में आ गया. All right. Anyone? Madhav? Madhav? Bhumika Mishra? Yes, sir.
समझ में आ गया? यस सर। ऑल राइट। नाउ अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यदि इसको आप लोग समझ गए हैं तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आगे बढ़े ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ऑल राइट, Yes. ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 and 350 respectively. So here I'm not going to write down the question. Now I will put the value from the book. So first and last term is given. So first term, that is A, that will be A. First term is 17. That is A is 17. Last term L is 350. If the common difference is 9, their common difference is given, that is 9. D is given, that is 9. How many terms are there and what is the sum? So now we have to find out how many terms are there and what is their sum and what is their so we have to find out the answer, that is we have to find out the number of the term, that is n, and sum as n of arithmetic progression, that is we have to find out this one. So again, first term is given, last term is given, here common difference is also given. So we can find out that is from the last term, that is from n we can find out from the value of n term. Value of n term equal to a plus n minus 1b. As a is given, value of last term, that is the an term is given, and b is 9. So we can find out from here, that is the n. हम यहाँ से निकाल सकते हैं. So by putting 300, n equal to 300. Last term is 300. Value of last term is 300, and value of first term is 17. Plus common difference is given 9. So n minus 1 into 9. We will solve it. It will be 350 equal to 17 plus 9n minus 9. You will get how much? 8 or 350 equal to कितना होगा? 8 होगा, 8 plus 9n or 9n, we can write down 9n minus कर देंगे इसमें, that's 342 or n equal to 342 by 9, 342 by
9. So we will get, that is how much we will get by dividing it 3 9 9 3 just 27, that is it will left 7 and 38. No, 9. What will be the answer? And value of n 38. It will 38. Now, as we have got the value of n, so we can find out now the Sn, sum of n term. So sum of n term Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 d. As d is given, here a is given, we have find out n 38, so we can find out as 38 equal to 38 by 2. 2 multiplied by 17 plus, we can write down 38 minus 1, 37 d. D is given, d is 9. Now we have to find out, it will be 38 by 2, directly 34 plus what will be the answer? 63 6 33. ऑलराइट, यही होगा. Now we will add it. It will be 19, directly 19. We will add 7, 6, 3, Sn 38 equal to, what will be the answer? It will be, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, that is 6 7 multiply by 19 left 6 66 3 7 6 3 3 7 9 6 9 7 3 6 9 7 3, that is 6,973. 6,973. So we have got Sn 38 equal to 6,973. समझ में आया ये प्रॉब्लम? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया. All right. तो ये समझ में आ गया. Now next problem is find the sum of first 32 term of AP in which D is 7 and 22nd term is 49. ये भी उसी तरह से बनेगा, इसमें D दिया हुआ है और लास्ट टर्म इज 49 149, तो ये भी बन जाएगा. कोई दिक्कत होगा क्या इसमें? नो सर. नो सर, नहीं होगा, बना लिए. एनी प्रॉब्लम इन 7 क्वेश्चन नंबर? आपके पास तो होगा, देखिए बुक में क्वेश्चन को. ऋतुराज? यस सर, बना लिए हैं. क्वेश्चन 7 बना लीजिएगा. बना लिए हैं. बन जाएगा तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसको छोड़ देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आप 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसी तरह से है, सेम है. दैट इज इसको फार्मूला को लगाना है. क्वेश्चन नंबर 7 में दैट इज द 22 टर्म दिया हुआ है, वहां पे तो 22 minus 1, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ 20. सर क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए ना. क्वेश्चन नंबर 8? यस सर. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 ही बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 उसी तरह से था
149 है उसका जो दिया हुआ है 22 टर्म का सम दिया हुआ है, दैट इज इन सर 7 बन जाएगा। बन जाएगा ना, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 हम बताते हैं। फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ AP whose second and third term is 14 and 18 respectively. All right. Question number 8. Find the sum of 51. Find the sum of 51 terms of AP of an AP, sum of an AP whose second and third term is whose second and third term are 14 and 18. Are 14 and 18 respectively. ठीक है, बन जाएगा। इसको बनाते हैं, बनने का तो बाद में बात है, यानी इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। So find the sum of the 51 term of an arithmetic progression. We have to find the sum of Sn 51. So we have to find out Sn 51. So we should have A, that is formula is n by 2. N is given 51. 2A plus n minus 1 and D. So here D is not given and A is not given. So we have to find out the D and A in this problem. So from the value of the terms that is given here, that is second and the term are 14 and 18. That is second term is 14. So second term A and value, that is the A second is given. A second equals to A plus n minus 1 and B. So here we will put 2. So its value is given 14. So 14 equal to A and 2 minus 1 D. We will get 14 equal to A plus D. This is the first equation. Now second one. That is third term is given 18. So similarly putting in this formula, that is the value of nth term, that is 18 equal to A plus 3 minus 1 3 or 18 equal to A plus 2D. That's it. From here we will find out the value of A and D. So now we can subtract from 2, that is the 1 from 2. Now we can write down that 2 minus 1. We can solve it, 2 minus 1. Simple. So A plus 2D equal to 18. A plus 2D equal to 18 and A plus D equal to 40. So by subtracting this in this way, that is, this will be cancelled out and left D equal to, that is 4. So here D is 4. Now putting value in 1,
Now putting value of d equal to 4 in 1, हम लोग 1 में पुट कर देंगे. Then we will get a equal to 14 minus that is d will 4 or it will be 10. So we have got the value of a, that is 10, and the value of d as 4. Now we have to solve the problem. We have to find out the 51 term. So we will put Sn, and you can see Sn equal to 51. That is, we have to find out the 51 term. The sum of 51 term equal to 51 by 2. Value of a is given, so 2a, it will be 10, as we have got value of a equal to 10, minus, that is plus n 51 minus 1, and d is 4. We have got the value of d is 4. So it will give 51 by 2, 20 plus 50 multiplied by 4. So 51 by 2, it will be 2 in 20 plus 200, or it will be 51 by 2 into 220, or it will be 51 by, that is 110 into 110. After multiplying it, how much will you get? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई आसान है नहीं. 51 को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 5 1 and 5, so 1 6 5, so 5 6 1 0. It will be 5 6 1 0. So 5610. That is the answer. 5610 is the answer for the sum of 51 sum. Here we have find out the a, and here we have find out the d, and in this way we have solved the problem 8. Now any problem? No, sir. No. No, sir. No, sir. Same. And now question number 9. If the sum of 7th term of an AP is 49 and that of 17th term is 269, and then find the sum of nth term. Find the sum of nth term. Here sum is given, and then you have to put the value of the Sn, and then you have to find out the a and d. सिमिलरली इसमें भी बनेगा. थोड़ा सा उसमें जैसे हम लोग यहाँ पर एस टर्म को वैल्यू पुट किए थे, उसी तरह से एसन का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे. बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9. Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, ठीक है, बन जाएगा तो ठीक है. इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे इसको सॉल्व करते हैं. Now we will solve the next problem, question number 10. Now we will solve the problem number 10, so that a1, a2
and an from an AP where an is defined as below. That is so that A1, A2 and an form an AP where an is defined as below. हमको ये शो करना है so that like now we have to show that is A1, A1, A2 and so on, that is form an AP and if an is defined as below, that is an is defined as below. Now here n is given that an equal to, that is the formula is given, that is the defined, that we have to find out the that is a equal to an equal to 3 plus 4n. 3 plus 4n. This is the question number 10, problem 1. That is an equal to 3n plus 3 plus 4n. So we have to find out the arithmetic progression. Now putting the value 1, 2, 3, we will get the A1. A1 equal to 1, when we put the value of n equal to 1, that is will give the first term. So 3 plus 4 into 1. So it will be 7. A1 equal to 7. Now A2. Now we will put the value of n equal to 2. So 3 plus 4 multiplied by 2. It will give, that is 8 plus 3, 11. Now next term is 3. So 3 plus 4 multiplied by 3. It will give 12, 3, 15. Now similarly we can proceed. So we will get the arithmetic progression, that is AP. That is 7, 11, 15 and so on. So this series is in arithmetic progression. क्या ये series arithmetic progression में है? So we have to find out if the common difference between the two terms will become similar, that is equal. At that time, that is it will become an arithmetic progression. So second term minus first term minus first term. So it will give 11 minus 7, that is 4. Second time we will find out by the third term minus second term. Now again we get, that is 15 minus 11, we will get 4. So as common difference between when we subtract from the second term to first term, and that is from third term to second term, we get the common difference same. So this is in arithmetic progression. ये arithmetic progression में है. Now we have to find out the sum of first 15 term. इस क्वेश्चन में first 15 term तक हम लोग को निकालना है sum. So we have to find out the sum. So we will find out the sum. Arithmetic progression is given here. As 50 equal to,
that is we have to put the formula, that is first we write on the formula of Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 b. So Sn 15 equal to 15 by 2 2a 2 multiplied by a is 7 plus n we have to put 15 minus 1, common difference is 4. Now 15 by 2 14 plus 14 multiplied by 4, 15 by 2. Now it will be total, that is 70, that is 56 but 14, that is 14 plus 56 is right now 35 by 2 into 70, or it will 35, or it will 35 multiplied 50. So कितना होगा 350 plus, that is 125. So you will get about 525. 350 plus 175, 525. This is the sum. समझ में आया? यस सर। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसमें, सेम इसी तरह से n का वैल्यू आप पुट कीजिएगा. an equal to 9 minus 5. Now same you have to put the value of n and you will get the arithmetic progressions, and you will get a series. Then you have to find out is this series in arithmetic progression or not. After finding out the common difference between the two terms, you can find out that is the common common difference, and if the common difference is same, then that series will be in arithmetic progressions. सेम इसी तरह से बनेगा. ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम लोग अब आज तो रहने देते हैं, आज क्लास भी हो गया है लगभग. नहीं, यदि कोई प्रॉब्लम हो, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, यदि आप इसको सॉल्व करके लाएंगे, और इसमें 3-4 क्वेश्चन और बता दूंगा, यानी इसमें टोटल प्रॉब्लम जो है 20 है इस एक्सरसाइज में. तो आफ्टर सॉल्विंग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे विल कंप्लीट. बना लिए हैं सर. कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. अभिषेक आनंद? नो सर, नो प्रॉब्लम. ऋतुराज? नो सर. ऋतुराज एनी प्रॉब्लम? नो सर, बना लिए हैं चैप्टर पूरा. वंदना कुमारी? दीपिका कुमारी एनी प्रॉब्लम? सर. भूमिका मिश्रा? नो सर. नो सर. रविकेश? नो सर. ऑलराइट. और आप लोग सॉल्व भी किए होंगे इसको कॉपी में, आप लोग अपना कॉपी में इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा टोटल. और शायद एग्जाम, हाँ बोलिए. एग्जाम जो है शायद फर्स्ट टर्म जो शायद अभी तक तो शेड्यूल नहीं दिया गया, मगर अंदाजन लग रहा है कि 22 तारीख लिखा हुआ था, तो वो 22 तारीख से एग्जाम भी होगा. ऑलराइट, तो फर्स्ट टर्म जो है वो होने वाला है, और इसलिए आप तैयारी भी कर लीजिएगा. अबाउट ये पूरा एक्सरसाइज आएगा. सर कब से एग्जाम्स? हेलो, ऑफलाइन होगा ना सर? कितना चैप्टर आएगा? 22 तारीख से शुरू है शायद, नहीं मालूम क्या? सर 5 अगस्त से. 22 नहीं, 22 से. हाँ, हम लोग को तो इन्फॉर्मेशन 22 से दिया गया है, और 22 तारीख से शायद हो सकता है, इसलिए आपको तैयार रहिएगा, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक आएगा. ठीक है सर? स्कूल में होगा. यस ऑलराइट. सर. मैथ से कोई चैप्टर रिमूव नहीं है? मैथ से चैप्टर रिमूव नहीं है, मैथ से कुछ पोर्शन रिमूव है. जैसे कि कुछ टॉपिक दिया हुआ है उसमें से वो रिमूव है, जैसे क्यूबिक वाला, पॉलिनोमियल में सर सिलेबस सेंड कर दीजिए ना. सर जो डिलीट वाला है ना सर, हाँ, सिलेबस सेंड कर दीजिएगा. क्या गया था परीक्षा से ऑनलाइन होगा.
वो जो सिलेबस जो है उसमें हम लोग सर जो पोर्शन डिटेक्ट किया गया है, डिटेक्ट किया गया, उसको हटाया गया है, तो उसको हम लोग अभी देख रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर सिलेबस सेंड कर दीजिए। और इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, इसको एक्सरसाइज में कोई खत्म नहीं किया गया है, कोई पार्टिकुलर एक्सरसाइज को खत्म नहीं किया गया है। कुछ टॉपिक जो है, छोटे छोटे टॉपिक जो है उसको हटाया गया है। ठीक है ओके सर। वो जो पिछले साल का जो था उसके आधार पे, भेज दीजिएगा। इस साल के आधार पर भी नहीं बोल रहे हैं, इस साल के आधार पे बताया जाएगा तो हम लोग बता देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू। सर सिलेबस भेज दीजिएगा ना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।